नमस्कार, वेलकम टू आरसीआई नवशिखर चैनल। आप सभी का आरसीआई के नवशिखर चैनल में स्वागत है। आज की ब्रेल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम एब्रीविएशंस और कॉन्ट्रैक्शंस को यूज करके आज एक इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ कराएंगे। और इस डिस्कशन के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट है प्रोफेसर सीडी तंबोली, जो हमारी इस एक्सरसाइज को सिखाएंगे व्यूअर्स को। तो आप ध्यान से सुनिए और जो भी आपके प्रश्न या डाउट्स पूछना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800112008 265111613। हमारा फैक्स नंबर है 265111609। तो आइए हम अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप आज व्यूअर्स को कॉन्ट्रैक्शंस और जो एब्रीविएशंस है एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज से बताना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। तो सर इसके बारे में बताइए हमारे व्यूअर्स को कि आज आप क्या बताना चाहेंगे। देखिए, ऐसा है कि सो फार आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द कॉन्ट्रैक्शंस एंड द एब्रीविएशंस। नाउ फॉर अ चाइल्ड टू रिमेंबर दीज थिंग्स and to make use of the signs properly, certain exercise would be very useful. Now, as I told you, those contractions from A to Z, these contractions stand alone. Now, for instance, the letter E stands for every. E-V-E-R-Y. That is how many? 5 letters. Now, I want you to write it in 4 letters. How do you write it? E-V-E-R-Y. There are 5 letters. इसमें आप contraction क्या use करते हैं? You can use E-V and then ER का contraction and then Y. तो ये 4 cell में हो गया. So instead of 5 cells you can make use of 4. But ये इसलिए I am telling you this because the child will easily remember the contractions कहाँ पे क्या लग सकता है. अच्छा, जो 4 सेल में तो आपने किया ये every. How about in 3 cells? 3 cells में हो सकता है? Yes, it is possible. Dot 5 E stands for ever and then Y. Dot 5 E Y. तो 3 सेल में हो गया. 2 सेल में हो सकता है? No. It can't be in 2 cells. It can be in 1 cell. In 1 cell क्या होगा? The letter E stands for every. Okay. Now let us take this word knowledge. K लिखने से knowledge हो जाता है. K-N-O-W-L-E-D-G-E. There are 9 characters over here. The full spelling has 9 characters. Now let's see. Can we make it into 8 characters? How do we make it into 8 characters? K-N-O-W-L-E-D-G-E. इसमें you can put the contraction of O-W, which is 246, K-N, then 246, and then L-E-D-G-E. This comes to 8 letters. Can it be in 7 letters? Yes, it can. K-N, O-W का contraction लगाया, L-E-D का contraction लगाया, and then G-E. K-N, O-W 3, L-4, E-D 5, and G-E 6 and 7. This is how the child will be able to exercise his complete knowledge about the whole thing. Let us take this word rather. R-A-T-H-E-R.
How many letters? 6 characters. R-A-T-H-E-R. I want it in 5 characters. How? R-A लिखा, T-H लिखा, E-R लिखा, ठीक है? E-R का कॉन्ट्रैक्शन दे दिया. और you can write R-A, T-H का कॉन्ट्रैक्शन and E-R. That comes to 5 characters. Can you make it into 4? Yes, you can. R-A लिखा, T-H का कॉन्ट्रैक्शन दिया, E-R का कॉन्ट्रैक्शन दिया. So this becomes into 4. You can't make it into 3, can you? No. You can make it into 1 character, that stands for, R stands for rather. Okay? Let us take this word very, V-E-R-Y. 4 characters, you can write it in 3 characters. V, E-R का contraction and then Y. You cannot write it in 2 characters, no, in 1 character you can write. It's of course V. Okay? So this is how the child will practice and he will learn things properly. Now let us take this word child, C-H-I-L-D. How many characters? 5. 4 में हो सकता है? Yes. C-H का contraction लिखा, I-L-D लिखा, so that comes to 4 characters. 3 characters? No. 2 characters? No. 1 character? CH का contraction is dot number 1-6. वो लिखने से child हो जाता है. When it stands alone. When CH is not attached to any word, before or after, then it stands for child. Okay? Let us take this word this, or let us take this word shall, S-H-A-L-L, 5 letters. In 4 characters you can write. How will you write? SH का SH का contraction and then A-L-L. And if you want it alone, 1 character, then it stands for 1-4-6. Dot number 1-4-6 stands for shall alone, when it is alone. Similarly, this, T-H-I-S, you can write it in 3 letters. TH का contraction लगा दिया, I-S लिख दिया. Okay? Let us take this word which, W-H-I-C-H. W-H-I-C-H, 5 characters. I want it in 4 characters. How do you do it? So we will use contraction. हाँ. CH का contraction. हाँ, तो 4 letters में होगा. How about in 3 characters? Sir, WH का contraction भी use करेंगे. And then CH का contraction as well. जी. तो WH का एक contraction हो गया, I and then CH का एक contraction हो गया. Okay? This word ought, O-U-G-H-T. How do you write? O-U-G-H-T, 5 characters. I want it in 4 characters. So we can use the contraction of GH या OU. And then OU का contraction दिया, GHT, 4 हो गया. If you want it in 3 characters, then we will use the contraction of both OU both. and GH. Right. And if you want to write it in two characters, So dot 5 and OU. Oh. Very good. Oh, you have done your homework, it seems, huh? That's nice. So in 2 characters also you can write OU GHT, dot 5 and OU ka contraction, which is 1, 2, 5, 6. This is how the child has to exercise. I am coming to more words. Still, S-T-I-L-L. How do you write? You can write ST का contraction and then ILL. 4 characters में हो गया. 3 characters में हो सकता है? No. 2 characters में? No. 1 character में? Yes. ST का contraction when it stands alone
it becomes dot number 3 and 4. That stands for still. Okay? These are the most important things that a child has to learn. Now, let's say, the word W-E-R-E, where? 4 characters, I want to have it in 3. How do we write? So we can use the contraction of ER. Yeah, W and then ER ka contraction and then E. And alone, 1 character, it's lower G. 2, 3, 5, 6. When it stands alone, it stands for where. Okay? Let's see. Now, what is the difference between was and by? How do you know the same contraction dot number 356 stands for was also and stands for by also? How would you distinguish this? So that must be depend on the position on which it is present. If dot number 356 is all alone without attached to any other word, then it stands for was. And when it is attached to the next word, then it stands for by. Although suppose by the, by and the, they are 2 separate words. But when this dot number 356 is attached to the next word, it stands for by. And if it is in the end of the word, then what happens? Then it is known as inverted commas closed. Okay? These are the complications and these are the things that a child has to remember. Let's say, now we get into the 2-letter signs. These, These, 5 characters. I want it in 4 characters. How? So we will use contraction of TH. TH and then ESE. ESE. 4 characters. Can it be in 3 characters? No, sir. Yes. THE का contraction दिया and then SE. The का contraction. The and then SE. 3 characters में हो गया. 2 characters. The can be used in the words or it is used in standing alone. Standing alone and also in the middle or part of the word. If you want to write brother, then you can use these words. Only from A to Z जो letters है, those characters which are between A to Z, A से तो नहीं होता कुछ, B to Z let's say, when they stand alone, then they are alone. All the other words can be used together. You remember I told you once that these 5 words and, for, of, the, with, although they are all separate words, but when you write it in Braille, they have to be attached to one another. कोई gap नहीं होगा. And for the, of the, with the, all these words would be together. Means जब भी हम इसको लिखेंगे तो इनके बीच में हम कोई सेल नहीं use नहीं करेंगे. Okay? Now, so 3 characters में भी हुआ. How about in 2 characters? 2 characters में कैसा होगा? .45 and then THE का contraction stands for these. Okay? The word those, THOSE, can be used in how many characters? 4. Yes, similarly using TH contraction. And then OSE. In 2 characters? .45 and TH. Okay? So 2 characters में हो गया. This is a wonderful exercise. It's extremely useful for the children. And normally when we teach Braille to our children, we don't do this exercise. This is really, इससे क्या होता है? The child will remember all his contractions and abbreviations. I am coming to that. Let's take the word whose, WHOSE. In 4 characters, WH का contraction दिया, OSE.
4 कैरेक्टर्स में हो गया, जी। हुआ कि नहीं? यस सर। Yes. And 2 characters, 4, 5, and then WH का contraction, which is 1, 5, 6. In the first cell you write 4, 5, and in the next cell you write 4, 5, 6. 1, 5, 6, sorry. That comes to whose. तो 2 में हुआ, 4 में हुआ, 3 में नहीं हो सकता, 1 में भी नहीं हो सकता. सर जैसे हम कॉन्ट्रैक्शंस की बात कर रहे हैं, वर्ड्स के अकॉर्डिंग कि ये 4 लेटर्स में आ सकता है, फिर 3 में या 2 में, डिपेंडिंग ऑन द वर्ड्स. तो सर ऐसा कोई रूल या कोई प्रिंसिपल है कि हम यही इसको 4 लेटर्स में ही यूज करना है या नहीं, 1 दिस इज letter? एन एक्सरसाइज फॉर द चाइल्ड. जहां व्हेन यू कैन राइट इट इन द मोस्ट शॉर्ट फॉर्म, देयर you should try to, but to make the child remember all the contractions, that is why we are doing this exercise. मीन्स इट इज, हम इस तरह से इसको स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं कि पहले पूरा स्पेलिंग मतलब बच्चे को बताते हुए राइट. उसको फिर फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ ऑल द चाइल्ड विल नो द होल स्पेलिंग, कितने कैरेक्टर्स में हुआ है वर्ड. देन ही विल ट्राई टू रिमेम्बर कहाँ कहाँ कौन सी कॉन्ट्रैक्शंस यूज हो सकता है, एंड अकॉर्डिंगली दिस वुड बी अ गुड एक्सरसाइज फॉर द चाइल्ड. एंड इफ दिस एक्सरसाइज इज डन विद द चाइल्ड, तभी उसका नॉलेज बिल्कुल सही हो जाएगा. means slowly and gradually we are moving on to the steps from remembering the spelling, whole spelling, to using the contractions and decreasing into the Real little contraction. letters. Okay. Yes sir. ये आप लोग को जो ब्रेल सिखाता है, nobody does this exercise. That is very very important. Let us take this word there, THEIR, 5 characters. I want it in 4 characters. How? So TH TH का contraction दिया, and EIR. EIR. Okay. How about in 3 characters? So TH and EI का contraction. EI का contraction तो है ही नहीं कुछ है. सर जैसे हम either लिखते हैं, हाँ, तो EI का contraction तो है नहीं. EA का contraction है. TH लिखा, TH द का contraction दिया, IR लिख दिया, तो 3 सेल में हो गया. 2 सेल में dot 4, 5, 6 and THE का contraction, which is 2, 3, 4, 6. Okay, very interesting. Let us take this word ever, EVER. How do we write? 4 characters. I want it in 3 characters. 3 characters में हो सकता है? जी सर. कैसे? EV और ER का contraction. Right. Okay. 2 characters में dot 5E. Dot 5E stands for Ever. ever. Let us take this word father. FATHER. 6 characters. I want it in 5. How? सर FA TH का contraction ER, या either we can use contraction of ER. FATH लिख के ER. 5 में हो गया. How about in 4? Sir, using both contractions FA TH and then ER. हाँ. And how about in 2 characters? So dot 5 F. F. Very good. Okay. See, this exercise is say you can remember all your contractions very well. Let us take this word here, HERE. How do we do? 3 characters. H लिख के ER का contraction and then E. E. And in 2 characters, Sir, dot 5 H. Can we use in that? in 2 characters, dot 5 H's stands for here. You are right. Okay. So this is how the child will learn. Let us take the word know, KNOW. 4 characters hai. I want it in 3. How? Sir, KN then contraction of OW. Very good. ये आपका भी brain exercise हो जाता है, Yes, है ना? sir. It's a very interesting exercise. This is how the child has to be taught. So in 3 characters, how about in 2 characters? So dot 5 K. Dot 5 K stands for ये. So 2 में हो गया, 3 में हो गया, 4 में तो full word हो गया. Okay?
The word mother, M-O-T-H-E-R, 6 characters. Which character is, I wanted in 5. Sir, M-O, then we will write contraction of T-H-E-R. And in other ways, we can write M-O-T-H and then E-R contraction. Okay. And if I wanted in 4? Sir, M-O-T-H, T-H और E-R दोनों का दोनों का contraction. contraction. And if I wanted in 2? Sir, dot 5M. M-O-T-H-E का contraction देखे भी तो R लिख सकते हैं. M-O लिखा, द का contraction लगा And और then R. R. तो 4 cells में हो गया. All right. Yes, sir. Part, P-A-R-T. 4 characters है. How do we write it? Sir, letter P, A-R का contraction. What is that? 3, 4, 5. Dot number 3, 4, 5 stands for AR. A-R. And then T. So 3 characters में हो गया. How about in 2 characters? So dot 5P. Very good. Question. Question, Q-U-E-S-T-I-O-N. There are how many characters? 8 letters, right? Q-U-E-S-T-I-O-N. I want it in 7 characters. How? So we can write Q, U, E, then S-T का contraction, I-O-N. Correct. तो 7 में हो गया. How about in 6? Sir, Q, U, E, हाँ. S और फिर T-I-O-N का contraction. तो ये तो 5 हो गया. Q-U-E-S, हाँ, 6 का में हो गया. Okay, fine. And how about in 2 characters? So dot 5Q. Good. The word right, R-I-G-H-T. 5 characters, I wanted in 4. Sir, here also we can write R-I, then G-H का contraction and then T. Okay, fine. And how about in 2 characters? So dot 5R. Right. Good. See, this exercise is really important. Under U-N-D-E-R, how do you do? So we can write U-N, then D-E-R का contraction. 4 cells में हो गया. Yes, sir. Can it be in 3 cells? No, I No, don't sir. think so. In 2 cells? Yes, sir. How? Dot 5U. Good. Young, Y-O-U-N-G. How do we do? Sir, in this we can write letter Y, then OU का contraction, then NG. तो कितना So ये जो था 4 characters में हो हाँ गया. जी 4 characters में आ जाएगा. And in 2 characters? So dot 5Y. Okay. Fine. See, this exercise आप लोगों को कोई कराते हैं क्लास में? Nobody does this. This is to brush up the contraction and abbreviations. I am coming to the abbreviations also later. आज मैं आपको दोनों करा दूंगा. There, T-H-E-R-E, 5 characters. I want it in 4. So How? similarly we can use the contraction here, either TH or ER. TH का contraction लिखा, E-R-E लिखा. Or we can, in other ways we can write TH separately, then ER का contraction and then E. अच्छा, how about in 3 characters? Sir, in 3 characters, THE का THE का contraction, and then RE. RE. And in 2 characters? Sir, yes, we can write. How? Sir, dot 4, Huh? 4? dot 4, 5. No. THERE is dot 5 and then the ka contraction which is 2, 3, 4, 6. देखो द के पहले यदि 5 लगे then it's there, THERE. यदि उसके पहले 4, 5 लगे then it is these, THESE. And if it is with 4, 5, 6 then it's there, THEIR. So this is a very interesting contraction. 5 और द से THERE होता है. 4, 5 और द का contraction से THESE होती है. 4, 5, 6 and द का contraction से THEIR होता है. Okay? So then THERE 5 characters में से you can make it into 4. Can you make it into 3? So there, Huh?
THE का कॉन्ट्रैक्शन लिखा, Yes, sir. RE, तो 3 सेल में हो गया. And in 2 cells, Sir, yes, you have told it. Dot 5 and the contraction, which is 2, 3, 4, 6. Let us take this word character, CHARACTER. 9 characters, 9 letters, right? I want it in 8 letters. How? So similarly, we will use here contractions CH, and then we will write whole the letters. ARACTER. Yes, sir. Okay. Or either we can use the contraction of ER at the end. How about in 7 characters? So we will use both the contractions together. Right. Okay. Let us take this word through, THROUGH, 7 characters. I want it in 6. How? Sir, we will use the contraction of TH, Okay. or in other ways we can use the TH contraction and then of ROUGH हो गया, 6 characters में हो गया. Or you can use TH full, ROU लिख के GH का contraction, जी. वो भी 6 में हो गया. How about in 5? Sir, both the contractions. हाँ, TH का भी दिया और GH का भी दिया. Okay? This is really very, very important. Where WHERE, 5 characters. I want it in 4. Sir, WH का contraction, then ERE. I want it in 3. Sir, we can use WH का contraction, then ER का contraction, and then E letter. Yes, and in 2 characters, Sir, in 2 characters, we will. got 5 लिख के WH का contraction, which is 1, 5, 6. Okay? तो 2 characters में हो गया. सर, ये जो सारे हम कॉन्ट्रैक्शंस यूज करके जो हम वर्ड्स कर रहे हैं, ये हम स्टैंडिंग अलोन के अलावा हम इसको पार्ट ऑफ द वर्ड में यूज कर सकते हैं. Yes. स्टैंडिंग अलोन में ओनली B to Z में आएगा. B, suppose if you want to write butter, BUTTER, you cannot write B लिख से but हो गया then TER लिख दिया, ये नहीं होगा. Only when but is a separate word, or can is a separate word, or every is a separate word, or only then these contractions can be used from B to Z. Okay, they are known ओनली as अल्फाबेट B to Z जो भी हमारे हैं, उनको ही हम स्टैंडिंग अलोन में मतलब आइसोलेशन में यूज कर सकते हैं. Otherwise बाकी no. सारे पार्ट ऑफ द वर्ड भी यूज हो सकते Correct. हैं. Right? Now let us take this word OUND. ये शुरू में लग सकता है. OUND का कॉन्ट्रैक्शन क्या है? Dot number 4, 6 and D. This comes in 2 cells. I want it in 3 cells. How? अच्छा, mind you, 4, 6 से जितने भी contractions है, they cannot be used in the beginning of the word. Why? So 4, 6 refers to some italic sign. That is why it cannot be used in the beginning. It can only be used in the middle or middle or end. Okay? I want to write FOUND, 5 words. I want it in 4 characters. How? OU का contraction, F, OU का contraction, then ND. D, right. How about in 3 letters? So can we write in 3 letters? Yes, why? F and then OUND का contraction, 4, 6, D. Okay. Okay? This is how the child will have to learn this dancing. कहता यार ये तो इसमें तो हमारा सारा brain exercise revise हो जाता है सारा. Let us take this word dance. तो चलो तो DANCE, dance. 5 letters. I want it in 4 letters में हो सकता है? No. 3 letters में? Yes. How? So D, then ANC का Contraction, which contraction. is 4, 6 and E. Okay?
The word motion, motion, 6 characters. I want it in 4 characters. 5 में तो नहीं हो सकता. How do you make it in 4 characters? So we can go with we will write M, then O, then TION का contraction. Right. So that comes to 4. How about this word passion? PASSION. It's PASS4ION. 7. I want it in 5 characters. So then we can go with the PAS, वो separately हम alphabets लिखेंगे. Then we can use the contraction of SION. Okay. Let us take this word bless. BLESS. 5 characters. I want it in 3. So we can write first alphabet B, then we can use the contraction of LESS. Right. So that comes in 3 characters. How about count? COUNT. 5 characters. I want it in 4 characters. How? So similarly, going with the above words, like in this, we can also write alphabet C, then OUNT का हम contraction use कर वो लें. तो 3 सेल में हो गया. 4 सेल में So 4 cell में we can write contraction of OU and then NT. NT. COU and then NT. Okay. Okay. Now let us take this word sentence. ये 5, 6, 4, 6 जितने contractions है and dot number 6. These 3 contractions, these 3 letters से जो contractions होते हैं, they can only be used in the middle or in the end of the word. Let us take this word sentence. SENTENCE. 8 characters. Okay? I want it in 7. How? Sir, in 7 we can use the contraction. SEN का contraction G. TENCE. 7 हो गया. How about in 6? So can we use the contraction of EN twice? Why not? SEN फिर T, फिर TEN. दोबारा EN का contraction, फिर CE. ये तो 6 में हो गया. How about in 5 characters? Sir, we will write S, EN, T, फिर ENCE का contraction. ये 5, ये तो 6 में हो गया. SEN. सर फिर इसके साथ हम EN का भी contraction use कर सकते हैं. S and then EN का contraction, then T and then ENCE का contraction. तो 5 में हो गया. Okay? Let's see. 5, 6 से तो जितना भी है. Suppose I want to write moment, moment, 6 characters. I want it in 5. Sir, in this we will write M, O, M, then EN का contraction, then T. तो 5 में हो गया. 4 में Sir, 4 में we can go with the first writing alphabet M, then O, then MENT का contraction. which is dot 5, 6 and T. Okay. So this is how we go on. City, CITY, I want it in 3 letters. Sir, C लिखिए, C, then ITY का contraction. which is what? Dot 6Y. No, dot 5, 6Y. सर इसका डॉट 56Y जो आपने बताया है, ये हम इसकी पोजीशन हम बीच में या आखिर में? हम इनिशियली इसका जो बिगनिंग में है वो यूज नहीं वो कर नहीं कर सकते हैं ना. I told you. But this is in the middle of the word. सकते. Yes, sir. C and then 5, 6Y. Okay. Or let us take this word station. STATION. How many characters? 7.
I want it in 6. How? Sir, in this also we will use the contraction. First we can use the contraction of ST. Then we will write the whole word like ST का contraction ATION. ATION. हाँ 6 में हो गया. ये 5 में हो सकता है. सर यस सर 5 में हो सकता है. कैसे? सर STA लिखेंगे. फिर हम TION का contraction. Very good. How about in 4? Sir, we will use both the contractions of ST and TION. ST लिखा, A लिखा था. How about in 3? Sir, we can't write in 3. Why? ATION का contraction है. .6N. ST लिखा .6N. Okay? Yes, sir. तो 3 में भी हो गया. This exercise is really important for the child to know. Now let us go into the abbreviations. Abbreviations में भी जावे या we have a break and then see what contractions can be used in the abbreviation. सर जो भी अभी तक हमने कॉन्ट्रैक्शंस डिस्कस किए हैं, आपने बताया कि किस वर्ड में हम कैसे यूज कर सकते हैं. सर इसका कोई बेसिक की पॉइंट्स या कुछ बातें बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को जो नहीं, the only thing is the child will have to know all the contractions. The child will also have to know where to use them and how to use them. Okay? और ये एक्सरसाइज करने के बाद उसका पूरा रिवीजन हो जाता है. This would be my final lesson for English Braille. Next Tuesday तो दिवाली है, छुट्टियां हैं. और उसके बाद I would also not be here. I'll see Braille mathematical code के लिए किसको भेज दूंगा. सर जैसे ये जो हम कॉन्ट्रैक्शंस यूज कर रहे हैं, जो हमारे बिगनर्स हैं जो ब्रेल सीख रहे हैं, उनको तो हमारा ये है कि इनिशियली हमको उनको पूरी स्पेलिंग्स बताना कि किस वर्ड की क्या स्पेलिंग है, ताकि फर्दर उनको जैसे That is why I am using these contractions ना. जी. Before we use the whole contractions, I ask you the full spelling. जी. फुल स्पेलिंग में कितने कैरेक्टर्स है, कितने लेटर्स है, वो देखे बच्चा. देन ही मेक्स एन एक्सरसाइज क्या क्या कॉन्ट्रैक्शंस इसमें लग सकता है. दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और हम जो वर्ड्स के जो हमारे सेल्स हैं, हम उनको धीरे धीरे ही इसी स्टेप पे आएंगे कि हम उसको सबसे कम सेल यूज करके कर सके. क्योंकि जो इनिशियल स्टेप होता है बच्चे का, वो ये होता है कि पूरा उसका वर्ड का स्पेलिंग बच्चे को आना चाहिए. उसके बाद उसे ये पता होना चाहिए कॉन्ट्रैक्शंस कौन कौन से होते हैं और कॉन्ट्रैक्शंस हम किस पोजीशन में कहाँ कैसे यूज कर सकते हैं. Correct. इन सब के बारे में पता होने के बाद ही बच्चे को पता चलेगा कि 2 कॉन्ट्रैक्शंस हम यूज करके 8 लेटर्स का अगर मान लीजिए वर्ड है, तो हम उसको 4 कैरेक्टर्स में या 5 कैरेक्टर्स में कैसे हम बड़े से उसको छोटा रिड्यूस कैसे हम कर सकते हैं. जी, gradually moving to the big letter word to small letter word. Right. Okay. So now we will take a break and after that I'll come to the abbreviations. कहाँ पे क्या क्या contractions लग सकता है. जो अभी तक हमने contractions डिस्कस किए हैं, जिसमें हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि जो B to Z अल्फाबेट्स होते हैं वो स्टैंडिंग अलोन आइसोलेशन में यूज होते हैं, और बाकी के जो हमने अभी तक एग्जाम्पल्स जो भी हमने डॉट सिस्टम के साथ जो भी हमने देखे, वो सब हमारे पार्ट ऑफ द वर्ड यूज हो सकते हैं. और ये हमने एग्जाम्पल्स के साथ देखे कि कॉन्ट्रैक्शंस हम कहाँ कहाँ किस पोजीशन में एक साथ कितने यूज कर सकते हैं, और उसको हम सेल रिड्यूस करके हम उसका स्पेस कैसे बचा सकते हैं. ये हमने देखा कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में. अब हम ब्रेक के बाद देखेंगे कि हम एब्रीविएशंस को कैसे यूज कर सकते हैं विद दिस इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज. सो बी देयर एंड जॉइन अस आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक.
Our vision at the Rehabilitation Council of India is to enhance the standard and quality of special education and rehabilitation services for the betterment of persons with disability in the country. Our mission is to regulate training policies and programs, standardize and develop training courses, recognize institutions and courses, promote research, maintain the Central Rehabilitation Register, collect and disseminate information to provide and improve the quality of special education. Our dream is to build a free environment for persons with disabilities by an enlightened special education system and to reinforce the education system by social engineering. The dream is total rehabilitation of persons with disabilities. वेलकम बैक टू अ सेशन ऑफ टीचिंग ब्रेल, जिसमें अभी तक हमने डिस्कस किया था अपने एक्सपर्ट के साथ कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में. हमने डिफरेंट डॉट सिस्टम्स के साथ हमने देखा कि हमारे कॉन्ट्रैक्शंस कौन कौन से होते हैं और हम अलग अलग वर्ड्स में उनको कैसे यूज कर सकते हैं, किन किन पोजीशंस पे हम उनको यूज कर सकते हैं और इससे हमारा स्पेस भी कम होगा. और जो बिगनर्स हैं, इनिशियल स्टेज में हैं, उनको स्पेलिंग्स बताना बहुत जरूरी है. और ग्रेजुअली हम we will moving on to the steps on decreasing the cells. Now we will discuss about the abbreviations with our expert. तो अगर आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी आप क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, तो हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं. हमारा टोल फ्री नंबर है 1800112008 265111613. हमारा फैक्स नंबर है 265111609. आपकी स्क्रीन पे टाइम टू टाइम नंबर्स फ्लैश होते रहते हैं, तो प्लीज डू कॉल अस एंड आस्क योर डाउट्स. नाउ वी विल स्टार्ट विद आवर डिस्कशन विद एब्रीविएशंस इन ब्रेल. सर, आप एब्रीविएशंस में किस तरह से बताना चाहेंगे? एब्रीविएशंस का तो लिस्ट हमने पहले दे दिया है. नाउ आई एम डूइंग द सेम एक्सरसाइज. व्हाट आर द कॉन्ट्रैक्शंस दैट कैन बी यूज्ड इवन इन द एब्रीविएशंस? Let us take this word abbreviation. ABBREVIATION. कितना अक्षर हुआ? ABBREVIATION. 12 characters. Abbreviation has 12 alphabets. Okay, I want it in 11 characters. How do we do this? A लिखा, double B का contraction दिया, which is dot number 2, 3, and then REVIATIONS लिख दिया. How about in ABB? Otherwise you can write A double B का contraction दे दिया, REVIA and then TION का contraction. Okay, तो और भी कम हो गया. Then we come to the word abbreviation, or the shortest form would be A double B का contraction 2, 3, REVI and then ATION का contraction dot 6N. Okay,
This is how the child will remember the contractions very well. Let us take this word about. A-B-O-U-T. ये दो सेल में कैसे लिखेंगे? What is the abbreviation of about? A-B. इसको if I want to write it in 4 cells, then it becomes A-B and then O-U का contraction and then T. Okay? 2 सेल में हो सकता है या 4 सेल में हो सकता है, 3 में नहीं हो सकता. According, this is another big word. A-C-C-O-R-D-I-N-G. कितने characters है? 9. A-C-C-O-R-D-I-N-G. I want to use in 8. How? A-double-C का contraction दे दिया. O-R-D-I-N-G. 8 में हो गया. How about in 7? A-C-C का contraction दिया. O-R-D-I-N-G. I-N का contraction दिया. G. ये 7 cells में हो गया. 6 cells में कैसे होगा? A-C-C का contraction दिया. O-R-D and then I-N-G का contraction दे दिया. So the child will remember the contractions, he will make use of them. और यदि इसको 2 सेल में लिखना हो तो the abbreviation is A and C. A C लिखने से according हो जाता है. Okay? After. A-F-T-E-R. The abbreviation is A-F. 2 सेल में हो गया. I want it in 3 cells. 3 सेल में तो नहीं हो सकता. 4 सेल में. A-F लिख के, T लिख के, and then ER का contraction. Okay? Afternoon. A-F-T-E-R-N-O-O-N. 9 characters. I want it in 8. How? A-F लिखा, T लिखा, ER का contraction दिया, N-O-O-N लिख दिया. Okay? Or if I wanted in the abbreviation, afternoon का abbreviation क्या है? AFN. AFN. 3 सेल में हो गया. Okay? After word, A-F-T-E-R-W-A-R-D. 9 characters. I want it in 8. A-F-T-E-R का contraction and then W-A-R-D. Or you can write A-F-T-E-R full 5 हो गया, W और AR का contraction देके D. Or you can use both the contractions, A-F-T, ER का contraction and then W-A-R का contraction and then D. Or you can write it A-F-W. Alright? Again, A-G-A-I-N. The abbreviation is 2 cells, A-G. In 4 cells कैसा होगा? A-G-A and then I-N का contraction. Okay? Against A-G-A-I-N-S-T. The child first has to know the spelling. A-G-A-I-N-S-T. What are the contractions possible? Abbreviation of course is A-G लिख के S-T का contraction लगा दिया. Dot number 3, 4. 3 सेल में हो गया. Can it be done in 5 cells? A-G-A-I-N का contraction and then S-T. Or it can be in 4 cells. A-G-A-I-N का contraction and then S-T. Okay? Already. A-L-R लिखने से already हो जाता है.
The full spelling is ALREADY. What are the contractions we can use over here? ALR लिखा, EA का contraction दिया, dot number 2 and then DY. Or otherwise the abbreviation of course is ALR. Okay? Let us take this word although. ALTHOUGH, 8 characters. I want it in 7. AL लिखा, THOU लिखा, GH का contraction दे दिया. Or you write AL, TH का contraction and then OUGH. It can be further down. AL, TH का contraction दिया, OU का contraction दिया, GH का दिया. So there are different ways of writing, and if you don't know the abbreviations, you will have to make use of the maximum contractions. And although लिखने के लिए केवल 3 सेल में ही हो जाता है, AL and then TH का contraction which is 1, 4, 5, 6. All right. This word altogether, big huge word, ALTOGETHER, 10 characters, 10 letters to write this word altogether. I want it in 9. Then what do you do? Sir, contraction either TH or either ER. AL TOGE, TH का contraction यूज करेंगे, फिर हम ER लिखेंगे. अच्छा, if it can be shorter still. So we can use both the contractions TH and ER. नहीं तो हो गया. इसके बाद इससे भी शॉर्ट हो सकता है. हाँ नहीं, वो सेम ही हुआ. ALTOGE, THE का कॉन्ट्रैक्शन एंड देन R. सेम ही हो गया ना जी. अच्छा. Let us take this word before, BEFORE. What is the abbreviation? .23 lower B जिसको हम कहते हैं, and then F. This is in 2 cells. I want it in 3 cells. How do you do? BE लिखा, FOR का contractions दे दिया, and then E लिखा. 3 सेल में हो गया. Okay? Behind, BEHIND. The abbreviation is lower B and H. Lower B is .23 and then H. 2 सेल में हो गया. I want it in say 4 cells. How? I want it in 5 cells. Sir, BE, H और IN का contraction and then D. अच्छा, 5 cells में हो गया. 4 cells में? Sir, 4 cells में can be written in the 4 cells? Yes, B का contraction शुरू में आ गया. H लिखा, IN का contraction आ गया, D आया. Sir, BE, that same lower B? Lower B. Lower B standing alone would be BE. In the beginning of the word it will be BE also. In the middle of the word it will be double B. And at the end of the word it will be semicolon. Okay? ये जो dot number 2, 3 इसका अलग अलग position में अलग अलग चीज होती है. This is also the child will have to remember. BELOW, below. How do you write? इसका abbreviation क्या है? Dot number 2, 3 and then L. 2 सेल में हो गया. I want it in 3 cells. BE का contraction दिया, L दिया and then OW का contraction दे दिया. ठीक है? I want it in 4 cells. BE फुरा लिखा, L लिखा, Then OW OW का contraction. contraction दे दिया.
और बी का कॉन्ट्रैक्शन दे दिया, LOW पूरा लिख दिया। ठीक है, यस सर। ये एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। beneath BENEATH 7 letters. BENEATH 7 letters. I want it in 6. How? सर TH का कॉन्ट्रैक्शन यूज करेंगे और बाकी स्टार्टिंग का जो वर्ड है एज इट इज लिख देंगे, उसमें जो उसकी You can use BE का contraction also. Yes, BE sir. contraction NEATH. इससे भी शॉर्ट करना हो तो दोनों कॉन्ट्रैक्शन यूज कर देंगे। नहीं, और भी लगेगा। BE का कॉन्ट्रैक्शन लगाया, N and then का EA का कॉन्ट्रैक्शन लगाया and then TH का TH का कॉन्ट्रैक्शन लगाया। कॉन्ट्रैक्शन। Okay? Between BETWEEN, BETWEEN, 7 characters. I want it in 6. B का कॉन्ट्रैक्शन लिखा। बाय द बाय, ये beneath का जो था, what is the abbreviation? Dot number 2, 3 and N. Okay? So the child will remember the abbreviation as well as making use of the contraction. Between BETWEEN. इसका abbreviation is dot number 2, 3 lower B and then T. All right? I wanted कितने 7 letters है ना, BETWEEN, हाँ। I wanted in 6. How do you do? BE का contraction दिया, TWEEN लिख दिया। I want it in, or you can write BETWE and then EN का contraction. Then I want BETW, BE का contraction दिया, TW लिखा, E लिखा and then EN का contraction दे दिया। Okay? The word blind, BLIND, 5 letters. इसका abbreviation is B or L. B, upper B of course, and then L. 5 characters में हमको 4 में करना हो तो BL लिखा, IN का contraction दे दिया, and then D लिखा. All right? Now this word, children, CHILDREN, 11 characters. I want it in 8. CH का contraction लिखा, ILDREN, तो 8 में आ गया, CHILDREN. So children 7 में आ गया CH का कॉन्ट्रैक्शन यूज करके। If I wanted in 6, तो CH का contraction दिया, ILDR and then EN का contraction दे दिया, which is dot number 26. CH का contraction क्या है? 16.16. Dot 16. And the abbreviation is dot number 16 and then N. All right? Chalo. What is the abbreviation of could? COULD. How do you write could? The abbreviation is CD. You can use C, OU ka contraction and then LD. All right? Similarly in should, SHOULD. What is the abbreviation of should? SH ka contraction, which is 146 and then D. That stands for should. 2 cell में हो गया. I want it in 4 cells. SH का contraction दिया, OU का contraction लिखा and then LD. If I want it in 5 cells, तो भी हो सकता है. SH पूरा लिखा, OU का contraction दिया. नहीं वो तो कितना हुआ? 3. SH पूरा लिखा, OU का contraction दिया 3, LD 5 में हो गया. And if I wanted in 4, तो SH का contraction दिया, OU का contraction दिया and then LD लिख दिया. In 2 लिखने से
in 2 cells. SH का contraction which is 146 plus D. All right. Friend. What is the abbreviation of friend? FRIEND. Friend. FR से लिखने से friend हो जाता है. 2 सेल में हुआ. I wanted in FRIEND. 6 cells में तो है. I wanted in 5 cells. कैसे करेंगे? FRIEN का contraction and then D. Okay. Let us take this word first. FIRST. FIRST कैसा होगा? Abbreviation is F लिख के ST का contraction which is 3-4. I wanted in 4 cells. FIR लिख के ST का contraction दे दिया. Okay? Sir, if the word is firstly, हाँ. then how can we write in? Well, even then you can write FST and then LY. Accordingly जैसा होता है. AC लिख के accordingly LY. Firstly भी लिख सकते हैं. Okay? Good तो छोड़ो. चलो. Let us take the word friend हो गया. Letter. LETTER. The abbreviation is LR. 2 cell में हो गया. I wanted in 5 cells. LETT लिखा 4 cells and then ER का contraction दे दिया. All right. Great. Great का abbreviation is GRT. If I want to write in 3-4 cells, then GR लिखा, A का contraction लिखा, which is dot number 2, and then write T. तो great हो गया. Now this word, big huge word, immediate. 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 9 characters in this word, immediate. How can you make it smaller in 8 characters? IMM लिखा, ED का contraction दिया, and then IATE. यदि आपको और छोटा करना हो, और तो छोटा हो नहीं सकता, then the abbreviation stands for IMM. Immediate हो जाता है. Immediately यदि करना हो तो then IMMLY. Okay. Now let us go to the next contraction, abbreviation. Let's see. Necessary. What is the abbreviation of necessary? NEC. 3 cell में हो गया. I wanted in CSS. Sir, it's a 9-letter word, necessary. हाँ. तो इसको हम रिड्यूस करके इसमें हम कॉन्ट्रैक्शंस यूज कर सकते हैं. सर जैसे कि हम इसमें AR का कॉन्ट्रैक्शन यूज कर सकते हैं. NECESS and then AR का कॉन्ट्रैक्शन Y. और कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो सकता इसमें. The abbreviation is of course NEC. Okay. Together. TOGETHER. 8 अल्फाबेट हो गया ना. 8 letters. I wanted in 7 letters. TOGETH and then ER का कॉन्ट्रैक्शन लगा दिया. I wanted still smaller in say T
TOGE का कॉन्ट्रैक्शन दे दिया, R लिख दिया, और यू कैन राइट TOGE TH का कॉन्ट्रैक्शन दे दिया एंड देन ER लिख का दिया। कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। सिमिलरली सर इसमें जो हम टुगेदर का जो हमने कॉन्ट्रैक्शंस डिफरेंट यूज करके इसको हमने वर्ड को शॉर्ट किया, इसमें TH का हमने कॉन्ट्रैक्शन यूज करा, ER का कॉन्ट्रैक्शन यूज करा और हमने THE का कॉन्ट्रैक्शन यूज करा। इस तरह से हम कॉन्ट्रैक्शंस यूज करके वर्ड्स को हम शॉर्ट कर सकते हैं, जो कि हम अपने आज के सेशन में देख रहे हैं एक्सरसाइज के थ्रू कि हमने वर्ड्स के में कॉन्ट्रैक्शंस यूज करके इनिशियली हमने उसको कैसे शॉर्ट किया। पर उसके साथ ये भी जरूरी है कि जिस बच्चे को हम ब्रेल सिखा रहे हैं उसको पूरी स्पेलिंग्स पता होना चाहिए। फिर धीरे धीरे आता है कि हम उसकी एब्रीविएशंस कैसे यूज कर सकते हैं। एब्रीविएशंस का मतलब होता है कि वर्ड को शॉर्ट में, जैसे हमने अकॉर्डिंग का किया, अभी हमने A B C, इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं अल्फाबेट्स में। उसमें हम देख रहे हैं कि हर अल्फाबेट को यूज करके, जैसे अबाउट है तो AB स्टैंड्स फॉर अबाउट, तो एब्रीविएशंस का मतलब होता है वर्ड को हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। हाँ, तो सर जैसे अभी हम जो हम अल्फाबेट्स के साथ हम जो एब्रीविएशंस कर रहे हैं, हाँ जी, इसमें भी हम वर्ड्स पार्ट ऑफ द वर्ड के साथ यूज कर सकते हैं। ओनली फॉर द चाइल्ड टू रिमेम्बर द कॉन्ट्रैक्शंस, ही हैज टू लर्न द एब्रीविएशन आल्सो। ठीक है। यस सर। लेट अस टेक दिस वर्ड टुगेदर, TOGETHER, 8 letters. I want it in 7 letters. TO लिखा, GE लिखा, TH लिखा और ER का कॉन्ट्रैक्शन दे दिया। और यू कैन राइट TOGE एंड द का कॉन्ट्रैक्शन 2 3 4 6 एंड देन R लिख दिया। द एब्रीविएशन इज TGR, 3 लेटर्स में ही हो जाता है। ऑल राइट। नाउ लेट अस टेक दिस वर्ड डिक्लेयर। क्यों नहीं है इसमें, होना तो चाहिए। डिक्लेयर, DCL, DECLARE, DECLARE, 7 letters. I want it in 3 letters से तो हो ही जाता है एब्रीविएशन में DCL। I want it in 6 letters, तो कैसे करेंगे? DECL, AR का कॉन्ट्रैक्शन लिखा एंड देन E लिखा। ओके, नाउ लेट्स सी। आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट द वर्ड्स जिसमें आप कॉन्ट्रैक्शन यूज कर सकते हैं। Let us take this word rejoice, REJOICE. इसमें कोई कॉन्ट्रैक्शन लग सकता है? No, there is no contraction. The abbreviation is RJC. Okay, now I will. सर इस तरीके से जैसे हमने रिजॉइस लिखा RJC, हाँ, तो हमारे जैसे वर्ड्स होते हैं रिजॉइसिंग, हाँ, तो उसमें भी हम RJC लिख के ING का कॉन्ट्रैक्शन, ING नहीं, ओनली G लिखने से ही हो जाता है। RJC और ओनली G। G. Okay. For instance, this word conceive, CONCEIVE. इसकी contraction is lower C, which is 2-5, upper C, which is 1-4, and then V. ये abbreviation हो गया conceive का। The full spelling is CONCEIVE. CONCEIVE. कितना? 8 characters हुआ ना? I want it in 6 characters. कैसे करोगे? CON का कॉन्ट्रैक्शन लगा दिया, CEIVE लिख दिया, तो 6 characters में हो गया। कंसीविंग के लिए मिडिल C, अपर C एंड देन VG। ING का कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगेगा यहाँ। आई एम ग्लैड यू आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन। सिमिलरली द वर्ड डिसीव, डिसीव इज DCV, इसमें कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं लग सकता। डिसीविंग वुड बी
DCVG. Okay. Perceive, PERCEIVE. इसमें आप क्या कॉन्ट्रैक्शन यूज कर सकते हैं? ईयर का कॉन्ट्रैक्शन यूज कर सकते हैं खाली. एंड द एब्रिविएशन ऑफ कोर्स इज P ER का कॉन्ट्रैक्शन विच इज 2 3 4 5 6 and then C and then V. Okay. Perceiving कैसे लिखेंगे? PERCVG. Okay. Receiving, receive is RCV and receiving is RCVG. Okay. Declare is DCL, declaring is DCLG. Rejoice is RJC and rejoicing is RJCG. Okay. Perhaps. What is the abbreviation of perhaps? PER and then H का contraction. PER का contraction which is 1 2 4 5 6 and then H लिख दिया. And the full spelling is PERHAPS. 7 I wanted in 6 characters. तो कैसे लिखेंगे? P लिखा, ER का contraction दे दिया and then HAPS लिख दिया. Okay. टुडे का कॉन्ट्रैक्शन एब्रिविएशन क्या है? TD, TODAY. I wanted in 4 characters. How? TO लिखा, .5D लिख दिया. But you cannot write TO का contraction लिख के DAY because today का जो TO है that is a part of the word. Only when TO is a separate word, then it has to be attached to the next word. Okay. Let us take this word tomorrow. TOMORROW. The abbreviation is TM. बस. अब कितना अक्षर है इसमें? TOMM. No, TOMORROW. TOMM नहीं है. TOMORROW. What contractions can you use over here? 2 का नहीं लग सकता, it's in the beginning. OW का contraction खाली इसमें लग सकता है. Okay. Tonight, TN लिखने से tonight हो जाता है. TONIGHT. How do you write? TONI लिखा, GH का contraction लिख दिया, T लिख दिया. Your. YOUR. 3 cells में कैसे लिखोगे? YOU का contraction and then R. And 2 cell में कैसे लिखोगे? Y and R. All right. Myself का abbreviation क्या है? MYF. इसमें और कोई contraction लग नहीं सकता है. MYF means myself. Thyself, THYSELF. इसका abbreviation है, TH का contraction लिखा and then Y and then F. Okay. Itself कैसे लिखेंगे? Itself. ITSELF. How do you write itself? And the abbreviation is X and F. X stands for IT and F लिखने से itself हो जाएगा. And when X stands alone, it is IT. And if it is in the beginning of the word, it can be only used with F. और भैया its लिखना हो, ITS लिखने के लिए भी also you can write X and then S. Itself लिखने के लिए X and then F. Okay. Himself कैसे लिखेंगे? HIMSELF. The abbreviation is HMF. Okay. Herself कैसा लिखेंगे?
H, ER का कॉन्ट्रैक्शन एंड देन F, हर सेल्फ हो गया. वन सेल्फ कैसे लिखेंगे? ONESELF. .5 वो 1 हो गया एंड देन उसके साथ F लगा दीजिए तो वन सेल्फ हो जाएगा. योर सेल्फ कैसे लिखेंगे? YRF is the abbreviation. YOURSELF. Yourselves. Yourselves is a big word. YOURSELVES. 10 कैरेक्टर्स लगता है. और आपको यहां पे कितने कैरेक्टर्स लगा है? एब्रीविएशन इज YRVS. YRVS stands for yourselves. Okay? Then we come to the word ourselves. OURSELVES. The abbreviation is OU का contraction and then RVS. 4 लेटर में हो गया आपका. Themselves. How do you write themselves? THEMSELVES. 10 characters. This can be written in 4 characters. THE का contraction लिखा, M लिखा, VS लिख दिया, तो 4 सेल में आपका काम हो जाएगा. Then I will tell you different signs. आपको मैंने बताया था. Dot number 2 at the end of the word stands for comma. Dot number which is lower B. Lower A. Lower A, when in the end of the word it stands for comma. Middle of the word क्या होगा? Middle of the word it will be EA. Okay? And lower B, which is dot number 2, 3. If it stands alone, it stands for BE. If it is in a part of the word in the beginning, it again stands for BE. जैसे आपको लिखना है better, तो lower B लिख के TER का contraction there, TTER लिख दिया. At the end, middle of the word, lower B stands for double B. Okay? Double B से कोई word बताओ. Rubber, RUBBER. RU लिखा, bubble लिखा, BUBBLE. And at the end of the word, it stands for semicolon. Okay? Lower C, dot number 25. Dot number 25 alone कुछ नहीं होता. Beginning of the word it is CON. Conduct लिखना हो, 25 लिख दिया, DUCT लिख दिया, हो गया. Middle of the word it stands for double C. End of the word it stands for colon sign. Colon जानते हैं ना? So, जो हम बीच में सेंटेंसेस में एज अ पंक्चुएशन मार्क उसको यूज करते हैं. सर जैसे जो भी अभी तक आपने कॉन्ट्रैक्शंस और एब्रीविएशंस बताए कि डिफरेंट अल्फाबेट्स को और डिफरेंट डॉट्स को यूज करके हम कौन से कॉन्ट्रैक्शंस और एब्रीविएशंस यूज कर सकते हैं, और धीरे धीरे हमने देखा कि हम एक वर्ड में कितनी कॉन्ट्रैक्शंस यूज कर सकते हैं, किस पोजीशन पे कैसे उसको यूज कर सकते हैं. इट्स यूजिंग एज अ पार्ट ऑफ द वर्ड और इन आइसोलेशन. जैसे कि बताया हमारे एक्सपर्ट ने, अल्फाबेट B to Z जो है वो हमारे पार्ट ऑफ द वर्ड यूज नहीं हो सकते, वो आइसोलेशन में यूज होते हैं. मतलब इंडिविजुअली अगर सेंटेंस में आते हैं तभी हम उसको यूज कर सकते हैं उसकी कॉन्ट्रैक्शन. और फिर हमने देखा कि अलग अलग अल्फाबेट से हम उसको डॉट्स के साथ कैसे हम पार्ट ऑफ द वर्ड में इनिशियल, मिडिल और फाइनल पोजीशन में हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं. ये जो लोअर ABCD जो है 5th लाइन जी, उसका अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग ये होता है. दैट इज व्हाट द चाइल्ड हैज टू रिमेंबर.
सर वही Lower तो D. आप अभी बता रहे हैं उसमें जैसे आपने बताया कि इनिशियल में हम क्या यूज कर सकते हैं, मिडिल में क्या है और फाइनल में, मतलब डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन हम उसको कैसे अलग अलग यूज कर सकते हैं। कुछ लोअर साइंस है जो अलग भी हो सकता है। लेट अस टेक दिस वर्ड लोअर डी, ये तो अलग नहीं हो सकता है। खैर, लोअर डी अलोन कुछ नहीं होता। बिगिनिंग ऑफ द वर्ड होता है DIS, मिडिल ऑफ द वर्ड होता है डबल डी, एंड ऑफ द वर्ड होता है, क्या होता है, फुल स्टॉप। लोअर डी एट द एंड ऑफ द वर्ड मीन्स फुल स्टॉप। डॉट नंबर 256. Okay, so you see the same dots. In the beginning it means something, in the middle it means something, at the end it means something, alone also it means something. अलग अलग पोजीशन में उस डॉट का मतलब अलग अलग होता है। हाँ। मतलब अगर हम वर्ड मतलब अलग से है, इंडिविजुअल है, आइसोलेटेड है, तो वो कुछ और रेफर करता है। अगर इनिशियल पोजीशन में है तो वो कुछ और रेफर करता है। मिडिल और बिगनिंग मिडिल और फाइनल पोजीशन में है तो वो अलग अलग रेफरेंस देते हैं। तो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेंटेंस में या वर्ड्स में हमें क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग, उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग हम कॉन्ट्रैक्शंस यूज करते हैं। राइट। नाउ लोअर ई का डॉट नंबर इज डॉट नंबर 2 एंड देन 6। 2 6 से लोअर ई होता है, 1 5 से अपर ई होता है, तो 2 6 से एक स्टेप नीचे आ गया। तो जैसा आपको मैंने बताया था, इन द फर्स्ट लाइन वी डोंट मेक यूज ऑफ डॉट नंबर 3 and 6. Similarly, in the fifth line we don't make use of dot number 1 and 4. Okay. Lower E जो है, when it is all alone it means enough. ENOUGH. And if it is in the beginning of the word or in the middle of the word, it is, or in the end of the word, it is EN. 10 लिखना हो TEN, then T लिखा और लोअर ई दे दिया। सेंड लिखना हो S लिखा, 2 6 लिखा और D लिखा, बीच में भी आ गया। एंड लिखना हो तो 2 6 लिखा और D लिख दिया। ओके। लोअर F अलोन कुछ नहीं होता। Beginning of the word it is TO2, but it is a separate word attached to the next word. Suppose आपको टॉप लिखना हो TOP, तो क्या आप लोअर F और P लिख देंगे? No. Only when you want to write to the or to him या to so and so, तो जो TO का contraction है, that would be attached to the next word. If it is in the middle of the word, it is double F. And if it is in the end of the word, it stands for exclamation sign. Okay? अलग अलग पोजीशन में इसका अलग अलग पोजीशन में। That is what the child says कि इतनी चीज कहाँ हम याद रखने जाएंगे यार, साला वो शुरू में कुछ बीच में कुछ। The child gets confused. Anyway, let me complete this whole thing. Lower G. The dot numbers are 2 3 5 6. Dot number 2 3 5 6 is lower G. When it stands alone, बिल्कुल अलग हो, then it is WERE. Okay? If it is in the beginning of the word, it stands for bracket open. Bracket का sign है ना? Beginning of the word में bracket open हो गया. Middle of the word, some people say you can write double G. Some people say no, that's not right. At the end of the word, it is again bracket closed. Suru या आखिरी में हो, then it's bracket open or bracket closed. Alone it is WERE, lower G. And middle, of course, some people say it's double G. Okay? Lower H. Lower H क्या होता है?
Standing alone means his, H-I-S. Beginning of the word, it is inverted commas open. Middle of the word कुछ नहीं होता है. End of the word it is question mark. Okay? Sorry. Lower H का हो गया. Lower I. Lower I is very simple. अलग हो तब भी IN, बिगिनिंग में हो तब भी IN, बीच में हो तब भी IN और एंड में हो तब भी IN. ओके. इन द यदि लिखना हो तो इन अलग से लिखा, द अलग से लिखा. इंक यदि लिखना हो तो IN का कॉन्ट्रैक्शन दे दिया एंड के लिख दिया. ब्लाइंड यदि लिखना हो या फाइंड यदि लिखना हो, F IN का कॉन्ट्रैक्शन बीच में आ गया, D आ गया. और यदि बिगिन लिखना हो, BEGIN, BE लिखा, G लिख के IN का कॉन्ट्रैक्शन. लोअर I इज वेरी सिंपल, इट इज एवरीवेयर इज द सेम. इसका अलग अलग नाम नहीं होता. लोअर J stands, when it stands alone, it is was. I have discussed this earlier. Lower J is was. Lower J, when it is attached to the next word, it is by. But it has to be a separate word. Suppose आपको लिखना है गुड बाय, BYE, तो आप BY का कॉन्ट्रैक्शन नहीं यूज कर सकते हैं. बाय द या बाय हिम या बाय जब होगा अलग वर्ड, देन इट विल बी अटैच्ड टू द नेक्स्ट वर्ड. मतलब अगर आइसोलेशन में स्टैंडिंग अलोन में है Was. और उसके साथ कोई वर्ड है तो उसके बीच में सेल नहीं छोड़ेंगे, हम उसको एक साथ ही लिखेंगे. राइट. मिडिल में कुछ नहीं होता है और आखिरी में इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड होता है. इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड होता है एंड दैट इज हाउ इट इज. सो नाउ what I have done is I have given you the contractions and the abbreviations. इसको कैसा यूज किया जाए, कहाँ पे यूज किया जाए, कितने मिनिमम सेल्स में लिखा जाए, फुल सेल्स में लिखने से कितना होता है, ये सारी एक्सरसाइज यदि किसी ब्लाइंड ने कर दिया बच्चे ने, देन ही विल डू एबल टू डू दिस. नाउ यू सी, जितने भी आपके हमारे देश में है, यू विल बी सरप्राइज्ड. यूरोप में जर्मनी हो, फ्रांस हो, हॉलैंड हो, स्विट्जरलैंड हो, कहीं भी हो, और पोलैंड हो, एनीवेयर वो लोग कॉन्ट्रैक्शंस सिखाते नहीं है बच्चों को. जैसे कि भाई इतने सारे कॉन्ट्रैक्शंस कहाँ से बच्चे याद रखेंगे, तो उसको पढ़ाई क्या करेंगे, इतनी कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाना चाहिए. बट आई फील कि दिस इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड. यूज करते करते आदमी को खुद ही आ जाता है. एक्सेप्ट इन लंदन. लंदन में कॉन्ट्रैक्शंस यूज होता है, बाकी पूरे यूरोप में कहीं भी कॉन्ट्रैक्शंस या एब्रिविएशंस यूज नहीं होता है. ओके सर, जैसे कि आपने हमें कॉन्ट्रैक्शंस और एब्रीविएशंस बताए हैं. हाँ. सर, इसमें कुछ ऐसे भी हैं कि मतलब आप बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को कि ऑफनली बच्चे ये मिस्टेक्स करते हैं इसको करते हुए, कुछ आप बताना चाहेंगे? मिस्टेक्स तो मतलब इफ यू डोंट रिमेम्बर द स्पेलिंग तो मिस्टेक हो जाएगा. सपोज ऑलरेडी का स्पेलिंग यदि कोई बच्चा लिखे ALREDY, तो बोले ED का कॉन्ट्रैक्शन यूज कर दिया. द स्पेलिंग इज ALREADY. Until unless the child has to remember two things. एक तो उसको स्पेलिंग आना चाहिए पूरा ठीक से, और दूसरा उसका कॉन्ट्रैक्शंस आना चाहिए, कहाँ कहाँ का क्या लग सकता है, और तीसरा उसको एब्रीविएटेड फॉर्म यदि कुछ हो तो वो क्या हो सकता है, वो भी उसको आना चाहिए. सो द थ्री थिंग्स द चाइल्ड विल हैव टू रिमेंबर. फुल स्पेलिंग, wherever contraction is usable वो करना, and if it is in a short form contraction जो है क्या है, .5 से क्या है, 4/6 से क्या है, and 4/6 का contraction हम बीच में नहीं यूज, शुरू में नहीं यूज कर सकते हैं. we can use it only in the middle or end. और 4/5/6 से क्या क्या होता है, 4/6 से क्या होता है. so all these things the child will have to remember, तभी जाके वो ठीक से ब्रेल लिख सकेगा.
सर जैसे हमने कॉन्ट्रैक्शंस देखी कि कौन कौन सी कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। अगर मान लीजिए बच्चे को याद नहीं रहती है कॉन्ट्रैक्शन और वो इंडिविजुअली लेटर्स के डॉट्स लिखता है, तो क्या ये सिस्टम गलत माना जाएगा? नहीं, या उसके बच्चे के मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, या ये बोला जाए कि ये इनकरेक्ट मेथड है? नॉर्मली क्या होता है, व्हेन जब हम इंग्लिश का टेस्ट लेते थे, आई वाज द प्रिंसिपल ऑफ द गवर्नमेंट ब्लाइंड स्कूल, व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, मैं एक पैसेज पूरा अनकंट्रैक्टेड ब्रेल में लिखता था। जैसे कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करता था जिसमें बहुत सारे कॉन्ट्रैक्शंस आ जाते हैं, एंड आई यूज्ड टू टेल द चाइल्ड कि भाई अब इसको तुम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखो, जहां जहां जो भी कॉन्ट्रैक्शन या जो भी एब्रिविएशन यूज हो सकता है वो आप यूज करो। फिर हम देखते थे कितना मिस किया कितना नहीं किया, अकॉर्डिंगली हम मार्क्स देते थे। और दूसरा पैसेज हम देते थे फुल्ली कॉन्ट्रैक्टेड, पूरे कॉन्ट्रैक्शंस में हम लिखते थे, और कॉन्ट्रैक्शंस के बाद उसका बोलेंगे अब इसको फुल स्पेलिंग के साथ लिखो, so that I know the child knows the spelling of each and every word जो contraction use करता है। This exercise is really very very important। सर आज का जो हमारा सेशन था एब्रीविएशंस और कॉन्ट्रैक्शंस, उसके बारे में और कुछ बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? नहीं, दिस इज, हमने तो कॉन्ट्रैक्शन एब्रीविएशंस के बारे में जो भी बता दिया, दिस इज द फाइनल। ये आई हैव शोन दैट ऑल द एब्रीविएशंस क्या हो सकता है, पहले भी मैंने किया था। आज हमने वही किया कि भाई एब्रीविएशंस जो है उसको यदि हम और भी थोड़ा सा बड़ा करके लिखना चाहे, इफ यू वांट टू यूज मोर सेल्स, तो पीछे क्या हो सकता है, कितने सेल्स से हो सकता है। दिस एक्सरसाइज आई हैव डन टुडे। सर थैंक यू सो मच फॉर गिविंग ऑल दिस इंफॉर्मेशंस टू आवर व्यूअर्स। हमारे व्यूअर्स ने देखा कि आज के हमारे सेशन के ब्रेल टीचिंग के सेशन में हमने देखा कि कॉन्ट्रैक्शंस और एब्रीविएशंस हम किस पोजीशन में कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं। हमने पूरा डिटेल्ड उसका एक्सप्लेनेशन देखा कि हर अल्फाबेट के साथ, हर डॉट सिस्टम के साथ कौन सा साइन किस पोजीशन में क्या रेफर करता है, उसके इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस क्या है, आइसोलेशन में उसका मीनिंग क्या है और पार्ट ऑफ द वर्ड में उसका मीनिंग क्या है। ये सब हमने आज के पूरे सेशन में देखा, और फाइनली हमारे को की पॉइंट्स भी पता चले कि स्पेलिंग पूरी आनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में पता होना चाहिए और उसकी पोजीशंस के बारे में पता होना चाहिए। ये हमने आज के सेशन में डिस्कस किया। हम और ज्यादा डिस्कस करेंगे अपने ब्रेल टीचिंग के नेक्स्ट के सेशन में। तो दिस इज द टाइम फॉर द क्लोजिंग ऑफ आवर सेशन। थैंक यू सो मच।